to you. In Samkhya, there's a study of 25 elements. The two main principal elements are जैसे आत्मा जिसने कहा है, लेकिन the word used in Samkhya is Purusha, which is unchangeful. Nothing ever changes in it. It is just self-illumined self, and it has the ability, whatever ability one talks of, it has it all. It has nothing to lose, nothing to gain. It does nothing. It doesn't undergo any change. Okay? The other element, the main element, is that which is constantly capable of change. It has all the abilities to undergo change. So one is unchangeful, another is changeful. It is this changeful which is made up of the three gunas: sattva, rajas and tamas. And these three gunas, when they are in a state of equilibrium, all is well. But they hardly ever remain in a state of equilibrium, because sattva is of the nature of pleasure, rajas is of the nature of pain, and tamas is of the nature of what shall I say, delusion. And this is constantly, they are always together, they are never separated, inseparable. Means anything that has pleasure will also have pain, will also have delusion. And but the proportion can vary. And also that in any moment of time, sattva is existence, rajas makes changes, its action is to exist, and the rajas action is to make motion, change, action, and for tamas is to try and resist them. So this is to be, this is to move, to change, and to be, and to resist the motion, the change. So they are always together. When sattva is dominant, the rajas and tamas are subordinate. When rajas is dominant, sattva and tamas are subordinate. When tamas is dominant, sattva and rajas are dominant. That is why we call certain situation or things as sattvic, rajasic, tamasic. It means one is dominating, yes, but that doesn't mean the others are not there. They are there, but in that moment of time, one is dominant. Besides dominating and subordinating, another relationship that they share is of mutual support. That in doing something, more of sattva is needed, then rajas will support that activity, tamas may support that activity. More rajas is needed, sattva can support that activity, tamas can support that activity, and not just lie down, dormant or subordinate. And similarly, where tamas is needed to resist something, sattva can support that activity and rajas can support that activity. So this is how they function at any given moment of time. In this, the equilibrium state of Prakriti, when reached, it does not remain in equilibrium the moment it is reached, because of the nature of rajas. Because rajas is always in motion. The three gunas are always in a state of flux. They have to be either dominating, supporting, or something. They cannot remain in any one state for more than a moment. They are constantly in change. So the moment, say, there is an equilibrium, the change also begins, because rajas is shifting. Now by the action of rajas, the sattva may become dominant and tamas subordinate, and by the action of rajas, tamas can become dominant and sattva be subordinate. So it depends on which way the force of change
is going. Now, what happens is the two, as if when they come together, because this action is happening in the knowledge, in the light of the Purusha. So the Prakriti thinks that it is doing all this for the Purusha. Yes, the Purusha needs it, so it's doing all this, getting dominant and subordinate. And the Prakriti evolves with these changes. The first evolute of Prakriti is called Buddhi. The next evolute from the Buddhi means Sattva dominant, and Buddhi is evolved. The Sattva continues to remain dominant, but the proportion changes in such a manner that it is not just a Buddhi, it has now evolved into Ahamkar. And then it continues to change so much that now the Tamas becomes dominant. It is still, there are some more evolving out of Sattva dominant. Yeah, Sattva continues to remain dominant, and there are 11 Indriyas that are evolved, of which one is Manas, 5 are Karmendriyas, and 5 are Jnanendriyas. So all these are Sattva dominant evolutes of Prakriti. Then Tamas becomes dominant, because all the time Sattva cannot remain dominant. Rajas is at work all the time. When Tamas becomes dominant, then evolves the Panchamahabhutas. There are Tanmatras in between, from which the Panchamahabhutas evolve. So the final evolutes are the Indriyas and the Panchamahabhutas. And we know the way they interact. Our Jnanendriyas interact with the Panchamahabhutas, observe the world of the Panchamahabhutas, right? Air, water, fire, earth, and all that. And that's how the interaction between the external world and our Indriyas take place. Our Indriyas gather all this information and also takes action with the external world. So therefore the Indriyas. But all these 10 Indriyas, they are reporting to whatever they gather information. Indriyas by themselves, like eyes, they cannot make meaning of what is being seen. That meaning is made by the mind, the Manas. Right? So all the information goes to the mind from the senses. The sense, the mind, refers to its stored files and give it a meaning based on whatever is stored. So, from previous knowledge, it's a file keeper actually. The Manas is only that. But it has to act very quickly. It is very, very quick. The Manas has to give this information to the Ahamkar. Ahamkar is pure eye sense. Its responsibility is to identify whether this is okay for me, is it going to serve me in any way, or it is not going to serve me in any way. Doable, not doable. And it offers it to Buddhi after putting its own remark on it. You know, वो ऑफिस के अंदर एक फाइल गई है मिडिल बॉस के पास, मिडिल बॉस ने अपना रिमार्क उसके ऊपर डाला है, फिर वो फाइनल बॉस के पास जाती है, बुद्धि के पास. नाउ बुद्धि also is sattvic, rajasic, tamasic, na? If the buddhi is in a sattvic state, it will probably remark on it कि अच्छा ये करो या नहीं करो. I have taken into account what Ahamkar is also saying कि ये doable है कि नहीं doable है. It will then, file will go back to Manas. Manas will instruct the Karmendriyas to take the action according to whatever has been directed by the buddhi. What happens over a period of time? And today's world is so much a quick world. सब कुछ जल्दी जल्दी करना है. अब मनस बोलता है कि मेरे को मालूम है ना, तुम यही इंस्ट्रक्शन दोगे, हर बार ऐसे ही आ रहा है. जो मेरे पास में है प्रीवियस फाइल से, उससे मैं काम कर लेता हूँ. ठीक है, प्रोसेस के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए अहंकार को भी भेज दिया. अहंकार ने भी बुद्धि से साइन ले लिया. बुद्धि भी बोलती है ठीक है, तुम करते आए हो, तुमने ऑलरेडी एक्शन ले लिया, मैं क्या बोलूँ. तो वो सात्विक बुद्धि ऐसे करते करते तामसिक हो जाती है, क्योंकि उसके लिए करने को कुछ छोड़ा नहीं है.
उसकी बात कोई सुनता नहीं है, इट्स वॉइस इज़ वेरी वीक, वो बहुत दूर बैठा हुआ है ना, एक्शन के पास में तो मनस है। तो इसी प्रकार से अहंकार भी जब तामसिक हो जाता है तो वो भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डरने लगता है और रेजिस्टेंसेस ज़्यादा क्रिएट करता है फिर, और ये जो हर्ट होना है वो ये रेजिस्टेंस है अहंकार का, कि उसका जो एक्चुअल स्वरूप जो है ये बुद्धि तो नहीं है ना, बुद्धि का सिर्फ एक काम है कि सात्विक रहना, वो जो प्योर लाइट है पुरुष की, उसके अंदर उसको सारा ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उस ज्ञान को अहंकार और मनस के थ्रू इंद्रियों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि अहंकार उसको अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर लेता है, मनस अपनी फाइलों के अनुसार चलता है, ये जो मैं सबकॉन्शियस बोल रही हूँ वो मनस के पास में है सारा, और जो हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं वो बुद्धि है। तो बुद्धि में हम जो स्टडी करते हैं और अपना रवैया चेंज करते हैं, चेंज परसेप्शन जो करते हैं, वो बुद्धि से हो सकता है। जहाँ हमने बुद्धि जो उसके पास ताकत है उसका सही इस्तेमाल करके जो डर है या जो भी एंग्जाइटी है, ये जो अहंकार है जिसको, इसलिए अहंकार गलत हो जाता है। अहंकार के बिना तो तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अहंकार बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम, द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो तुम नहीं हो तो सारी दुनिया ही नहीं है। तो आई एम वाला जो सेंटेंस है, एम इज बुद्धि, आई इज अहंकार, एंड आई एम व्हाट इज व्हाट एवर द मनस एक्शन डज। तो यदि मनस बुद्धि का कहना मान के एक्शन करेगा तब तो हम ग्रोथ करेंगे, लेकिन मनस अपनी आदत के अनुसार जो उसके फाइल में है, पूर्व कर्म का जो संस्कार आ रहा है, जो सबकॉन्शियस में से ऑटोमेटिकली आ रहा है, सिर्फ उसके अनुसार काम करेगा, तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस की जब हम बात करें कि भाई जैसे हमको उस प्रकार से ग्रो होना है, तो हमारे को हमारी बुद्धि बदलनी पड़ेगी। ये मनस, अहंकार और बुद्धि के खेल को जानना पड़ेगा। तो इफ वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ अवर हायर सेल्फ, जब हम बोलते हैं द हायर सेल्फ इज द बुद्धि, which is closer to our real soul that we are, and only through buddhi can you achieve that soul. So you have to be in touch with your higher self, and we have to learn to listen to that weak voice inside us, वो जो हम बोलते हैं ना, my conscience did not allow me, यानी कि उस समय वो जागृत था और अहंकार उसके डिक्टेट फॉलो कर रहा था, न कि मनस को मन की मर्जी करने देने का और खुद की जो रेजिस्टेंसेस हैं वो मनस के ऊपर और थोप देने का। तो अहंकार में भी तीनों गुण हैं। सात्विक अहंकार बुद्धि की बात मानता है और बोलता है ओके, आई एम विलिंग टू ओवरकम दिस फियर एंड लेट गो दिस, आई एम विलिंग टू ओवरकम दिस लाइक्स एंड डिसलाइक एंड मेक मनस एक्ट डिफरेंटली देन व्हाट इज रजिस्टर्ड इन द फाइल। और इसीलिए रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनस की फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ओवरराइट करना है। इफ यू टॉक इन दिस टर्म्स ऑफ फाइलिंग, जो हम वीसीटी करते हैं वो हम क्या करते हैं, वो जो पैसा लिखा हुआ है उसको थोड़ा धुंधला कर देते हैं और उसके ऊपर हम रिपीटेडली पॉजिटिव इम्प्रेशन डालते हैं, ताकि पुराना तो साफ हो जाए और ये नया जो बेहतर है जो हम हमारी बुद्धि से लगा रहे हैं वो उसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाए, तो उसका जो ऑटोमेटिक काम भी है वो भी सात्विक होने लगेगा, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला होने लगेगा।